morning to all of you. Today we are going to discuss mock test number 4 and chemistry explanation है part है देखो question number 51 है 2 moles of a gas is expanded isothermally reversibly from 10 liters to 50 liters at 300 Kelvin. Work done during the process is given. I think answers are given in kilojoules में. So question number 51 आप देख लीजिए. Question number 51 है. Question number 51 है. 51 है. अच्छा वर्क मैक्सिमम आइसोथर्मल प्रोसेस में फॉर्मूला क्या है? -2.303 nRT log V2 by V1. मतलब they given 2 moles का 2.03 to 2 approximately 2 moles का. Answers are given kilojoules में. Kilojoules में इसका R का वैल्यू है 2/3 into 10⁻³ kilojoules में. ये R का वैल्यू है. अच्छा टेम्परेचर गिवन 300 केल्विन. log V2 by V1 50/10 है मतलब log 5. अच्छा सिंपलीफाई करो -2.303 into 2 into 25 into 300 by 3 into 10⁻³ log 5 value is 0.7 approximately. 0.7 approximately. अच्छा 3 1s 300s. अच्छा देखो 100 into 10⁻³ 10⁻⁻1. अच्छा देखो यहाँ -2.03 into 50 50 into 10⁻⁻1 into 0.7. अच्छा -2.03 into 5 into 0.7. अच्छा अप्रोक्सीमेटली देख लीजिए कितना हो. अप्रोक्सीमेटली अच्छा ये 7/10 लिखता है मैंने. 7/10 है सपोज 7/10 है. अच्छा 35 into 2. अच्छा अप्रोक्सीमेटली 80 80/10 approximately -8 kilojoules approximately -8. अच्छा देखो approximately -8 फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट. फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट. Next 52. Which among the following is not a common component of the photochemical smog? अच्छा photochemical smog is nothing but oxidizing property. अच्छा photochemical smog oxidizing nature है. Ethanol is not included. Remaining all are included. Acrolein है, nitric oxide है, PAN है. अच्छा all these are components of photochemical smog है. Is nothing but oxidizing है nature है. And this London smog is an example for reducing air. Photochemical smog example for oxidizing nature. Which is the component not involved? Ethanol is not involved in this component. Next. Question number 53. अच्छा ये जो nernst इक्वेशन है आप देख लीजिए. nernst इक्वेशन कैसा लिखना है? nernst इक्वेशन अच्छा what is anode? What is this is anode है. This is cathode. Am I right? अच्छा एनोड का इक्वेशन लिखो. एनोड का इक्वेशन Ni यूज राइज टू Ni +2 इलेक्ट्रॉन. एनोड का इक्वेशन. अच्छा कैथोड का इक्वेशन है अच्छा Cu+2 इलेक्ट्रॉन यूज राइज टू Cu. ये कैथोड का इक्वेशन. अच्छा ये सॉलिड है. ये सॉलिड है. सॉलिड की एक्टिविटी 1 है. सॉलिड का एक्टिविटी 1 है. सॉलिड का एक्टिविटी 1 है. सॉलिड का एक्टिविटी 1 है. सो दैट्स व्हाई आई गो फॉर Cu+2 यूज राइज टू Na+2. अच्छा यहाँ Qc का वैल्यू क्या है? Na+2 अपॉन Cu+2. दिस इज Qc का वैल्यू प्रोडक्ट्स बाय रिएक्शन. अच्छा Na+2 कितना दिया? Na+2 is 10⁻1 10⁻2 10⁻1. अच्छा 10⁻2 10⁻1 मतलब कुछ इज इक्वल टू 10⁻1. अच्छा Qc है.
For your kind of information, chemistry equation E is equal to E naught minus 0.059. Number of electron involved is equal to 2. Log this value we got 10 power minus 1 to the base 10. अच्छा minus है minus plus है. E is equal to E naught plus approximately this is 0.3. 0.06 by 2, 0.03. In the problem, E value is given, I think so. E value is given, which is equal to 0.58 is given. 0.58 is given minus 0.03 is equal to E naught. This is nothing but 0.55. 0.55 is equal to E naught. But E naught is equal to E cathode minus E naught is equal to E cathode minus E anode. अच्छा E naught वैल्यू कितना है 0.55 आया. E cathode कितना है 0.34 है माइनस E anode का कितना होगा E anode. अच्छा ये देखो ये कंडीशन क्या है. अच्छा दिस इज गिवन है बट दिस इज ऑक्सीडाइजिंग प्रोपोर्शन है. अच्छा आपको चाहिए रिड्यूसिंग है SRP वैल्यू है which is equal to plus 0.34 होना चाहिए. So suppose you are writing here minus is गलत आता है, so plus होना चाहिए. So E anode is equal to 0.34 minus 0.55, approximately minus 0.21. Minus 0.2. अच्छा देखो minus 0.2. S54 है. Which of the following statements are correct only? अच्छा proteins which perform the role of biological catalyst in the body are called enzymes etc. मतलब ये correct only? Correct है. Drugs which compete with the natural substrate for their attachment on the active sites of enzymes, this is called correct only. As this I think previous paper also we discussed this. मतलब all are correct statements only. Which of the following statements are correct or incorrect? This kind of questions are so many times asked in previous NEET examination questions. Sir, beware of this one. S55. Ajay, this is Lindahl's catalyst, na? This is nothing but bridge reduction. Bridge reduction. Ajay, what kind of bridge reduction is for? Not for terminal alkynes. अच्छा ये टर्मिनल अल्केन के लिए नहीं है, इसे टर्मिनल अल्केन है. अच्छा ये वाला सीसा है, ब्रिज रिएक्शन के लिए मेजर कंपाउंड ट्रांस है. अच्छा ये वाला करेक्ट है. बट देखो टर्मिनल अल्केन्स यस सपोज सी एच होना चाहिए ना. टर्मिनल अल्केन के लिए इट इज नॉट एप्लीकेबल है. नॉन टर्मिनल अल्केन के लिए इट इज एप्लीकेबल है. अच्छा देखो यहां भी ये कैसा होना चाहिए, ये वाला कैसा होना चाहिए, ये वाला चाहिए राइट. अच्छा टर्मिनल अल्केन सपोज ये आल्सो CH2. टर्मिनल अल्केन के लिए दिस इज नॉट सूटेबल रिएजेंट. द ओनली थिंग इज सेकंड ऑप्शन है ट्रांस आइसोमर फॉर्म. ब्रिज रिएक्शन के लिए ट्रांस आइसोमर में, लिंडास कैटलिस्ट के लिए सिस आइसोमर है. अच्छा 56. अच्छा which of the following statement is wrong? अच्छा first one correct only. NO2 is a paramagnetic in character. N2 is a more reactive than P4, which is incorrect. NO is a neutral oxide character. NO N2O laughing gas also. अच्छा N2 is a more reactive than P4, which is incorrect. N2 is N triple bond 3 है. Bond dissociation energy is around 946 kilojoules per mole. Less reactive है, सबसे less reactive N2 है. PH3 can acting as ligand है. अच्छा भी coordination compound में PH3 or PPH3 taken thrice, these are acting like ligands only. All are correct statements except third one, 56 one. Now 57 है, देख लीजिए 57 है. अच्छा 57 का क्वेश्चन है,
Which of the following statements are incorrect है? They're asking incorrect है. Which of the following statement is incorrect है? अच्छा देखो from top to bottom +1 oxidation increases only because of inert wear effect of thallium. Correct only. Aluminum liberate dihydrogen with acid as well as base also. Correct only because aluminum is a amphoteric. Aluminum hydroxide, aluminum hydroxide is amphoteric in character. React with both acid as well as bases. अच्छा boron is unable to form because boron को maximum valency 4 only 6 नहीं होता है, which is incorrect only. Boric acid is a weak arsenous acid, which is incorrect है. अच्छा boric acid is a Lewis acid है. Very bad familiar example है. So many times asked है. BOH taken thrice is not an arenes acid, is a Lewis acid which can accept a para-parectum from water. So this is the correct one. Next 58 है. Coles reaction है. अच्छा Coles reaction में salicylic acid है. A4. अच्छा A4 दो ऑप्शन में है. अच्छा easily to remember. A4 दो ऑप्शन में है. Second Stefan's reduction nothing but cyanide into aldehyde है. B1 है. अच्छा B1 एक ही ऑप्शन में देखो. अच्छा no need to go for other options also. एक ही ऑप्शन में है. अच्छा C4 है. Hoffman bromide degradation reaction है. Hoffman bromide degradation reaction है. Then Schwarz reaction D is nothing but 3. D3 होना चाहिए. अच्छा देखो ये वाला करेक्ट, ये गलत है. ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है. C1 है. अच्छा Schwarz reaction नथिंग बट अल्काइल फ्लोराइड्स के लिए C2 होना चाहिए. D3 B1. अच्छा स्टीफन रिएक्शन. अच्छा देखो कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस 4 है. स्टीफन रिडक्शन इज नथिंग बट aldehyde है. Hoffman degradation इज प्राइमरी एमाइन है. Schwarz reaction इज 3. अच्छा देखो ए के लिए 4 है. ए के लिए 4 है. बी के लिए 1 है. सी के लिए 2 है. अच्छा डी के लिए 3 है. अच्छा ये ऑप्शन है. ए के लिए 4 है. अच्छा ये याद करो. ये सपोज आई थिंक ये गलत हो गया. ये सही ऑप्शन ये वाला है. कोल्स रिएक्शन इज 4 है. स्टीफन रिडक्शन इज नथिंग बट aldehyde है. B1 है. C2 है. D3 है. अच्छा फर्स्ट ऑप्शन है ना सर. ये फर्स्ट ऑप्शन है ना सर. फर्स्ट ऑप्शन है. ये 4 है. B1 है. C2 है. D3 है. फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट. अच्छा कंफ्यूजन मत करो. 59. According to the molecular orbital theory, which of the following does not containing 1 sigma 1 pi bond है? C2 है. अच्छा very good example है यहाँ. C2 के लिए all are pi bonds होंगे. The reason आप देख लीजिए. C2 means total number of electrons is 12 electrons. अच्छा sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, pi 2px2, pi 2py. अच्छा काउंट करो 2 4 6 8 10 12. अच्छा देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन pi ऑर्बिटल में मतलब one of the carbon atom of pi 2px. Sorry. One of the carbon atom of 2px, another carbon of 2px, lateral overlapping pi 2px2 is formed.
अच्छा, one carbon atom of 2py, other carbon atom of 2py, lateral overlapping form pi 2py. मतलब both pi bonds are nothing, both are bonds are nothing but pi bonds only. So this is according to the MOT, right? Chalo. Next question number 60. Incorrect order of the first ionization enthalpy of the given elements. Incorrect order है. Incorrect order of क्या है? अच्छा, first one correct only. Second one also correct only. अच्छा, fourth one incorrect ना देखो. Since nitrogen is greater है, then option होना चाहिए. Reason is 2p3, 2p4. Half-field orbital gets extra stability only. In order to remove the electron from half-field orbital, we require more energy. That means fourth option is incorrect only. Incorrect order they ask you. अच्छा, correct statement about the Teflon is. अच्छा, only one option correct ना? Tetrafluoroethene with the persulfate means peroxides catalyst. अच्छा, it is a copolymer. It is a copolymer is incorrect. Only one monomer is present in homopolymer only. This is a now here removal of any molecule is not possible. It is not a condenser polymer. This polymer is very reactive. It is not a corrosive. Reacts readily with corrosive reagents, which is incorrect because Teflon is nothing but is a insulating material. Cannot react with any other reagents to get a corrosion. There is no chance for corrosion. So that means which is correct statement is second option only correct statement. Now question number 62. Question number 62. Actually, given MOH taken twice. Question number 62. Actually, M plus 2OH minus. This is yes, sir. This is 2S. Now, and there are this is in this 0.2 molar NaOH also there. Due to NaOH, this is 0.2 molar. Due to NaOH, that is 0.2 molar. 0.2 molar. So KSP calculate करना. S into 2S plus 0.2 whole square. अच्छा, without this KSP is equal to without 0.2 ना S into 2S whole square, which is equal to 4S3. But by adding 0.2 molar NaOH solution, it becomes this is. Now you can expand करो. S into A plus B whole square, 4S square है. अच्छा, 0.4S है. अच्छा, 2AB 0.8S है. Plus 0.2 whole square. The 4 into 10 power minus 2. Expand करो. 4S cube 0.8S square. 4 into 10 power minus 2, yes. Achha, when compared to S square times S cube sums are negligible. Then KSP is equal to 4 into 10 power minus 2, yes. Achha, KSP values are given. 4 into 10 power minus 15. 4 into 10 power minus 15. 4 into 10 power minus 2 into S. Achha, 4 cancel है. 10 power minus 13 है. Yes sir. अच्छा, ऐसे 10 power minus 13. Very simple है, आप एक बार देख लीजिए. अच्छा, S plus 2S if there is no common ion, but 0.2 molar NaOH added. That's why 2S plus 0.2. Now according to the formula KSP is equal to S into 2S plus 0.2 whole square. Simplify किया. When compared to S square S cube terms are negligible only. KSP value already given है. Then substitute किया S value about it, which is equal to 10 power minus 13. अच्छा, first order reaction है, as rate constant is given 3 into 10 power minus 3 second minus. The time required for 60% completion of the reaction is nearly 60% completion is nearly. अच्छा, 60% है.
T 60% आपको चाहिए 2.303 by K log 100 by 100 minus 60. अच्छा 2.303 by K value is given 3 into 10 power minus 3 log 100 by 100 minus 40 मतलब log 5/2 मतलब आप ऐसा कर सकता है दिस वैल्यू इज नथिंग बट अच्छा देखो मैंने यहां करूंगा log 100 by log नथिंग बट log 5/2 अच्छा log 5/2 वैल्यू कितना है log 5 minus log 2 log 5 is 0.7 approximately log 2 0.3 approximately which is equal to 0.4 shall we write here 2.303 into 0.4 divided by 3 into 10 power minus 3 calculate karo approximately 300 denaturation of proteins results into अच्छा फॉर काइंड इंफॉर्मेशन डीनेचर ऑफ प्रोटीन्स में प्राइमरी सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं है the only change is secondary tertiary sequence secondary and the tertiary structure of proteins will breaking अच्छा ये वाला denaturation of proteins are sequence of primary means primary structure of amino acids retain same which are changed secondary tertiary structures are will change denaturation of proteins and 65 अच्छा फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन दे आस्क द क्वेश्चन है electrophilic EAS reaction they are asking अच्छा this is a NAS ना nucleophilic aromatic substitution because instead of BRI NH2 instead of one nucleophile another nucleophile nucleophilic है अच्छा ये होता है electrophilic substitution कैसा है देखो ये वाला CH3 CH double bond CH H plus right अच्छा ये सेकेंडरी कार्बोकेटन फॉर्म ना अच्छा इंस्टेड ऑफ वन H plus है दिस ग्रुप इज रिप्लेस्ड है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अच्छा देखो व्हेनेवर यूवी लाइट है फ्री रेडिकल के लिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन साइड चेन में सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है अच्छा here also instead of this na instead of nucleophile another nucleophile that is nothing but nucleophilic aromatic substitution but they are asking electrophilic aromatic substitution is क्या है next 66 अच्छा ethanol in water is an example for Raoult's law showing positive deviation this is an example for positive deviation from Raoult's law. Positive deviation from Raoult's law. Raoult's law. मतलब minimum boiling azeotropy. Minimum boiling azeotropy. This is minimum boiling azeotropy. Positive deviation example for minimum boiling and negative deviation example for maximum boiling. Liquid and vapor phase. Same composition liquid and vapor phase. अच्छा देखो ये वाला करेक्ट है मैक्सिमम मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोपी व्हिच शोस ए large negative deviation which is incorrect अच्छा करेक्ट ओनली फर्स्ट ऑप्शन मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोपी having same composition liquid and vapor phase एज़ोट्रोपी means acting like a pure liquid only same composition है liquid and vapor का अच्छा 67 है आप देख लीजिए 67 में जनरली rate of reaction measured only in slow step means rate law is explained only in slow step मतलब देखो 67 क्वेश्चन नंबर 67 है व्हाट इज स्लो स्टेप रिएक्शन आप देख लीजिए स्लो स्टेप में रेट इज नथिंग बट
K into concentration of O, concentration of O3. देखो एक बार, concentration of O and concentration of O3, concentration of O and concentration of O3. But in option में concentration of O is not given है, because intermediate product है O is not given है. That's why we know fast reaction is an equilibrium only. Fast reaction के लिए equilibrium constant लिखो. For fast reaction equilibrium constant Kc. अच्छा, Kc is equal to concentration of products by concentration of the reactants. Concentration of products is O2 and O divided by concentration of the reactant O3. But in this equation, instead of oxygen, we can substitute this equation K into O3 and O2 minus. Now substitute this equation, this O in first equation. यहाँ substitute करो. Then R is equal to constant K into, instead of O, Kc, अच्छा O3, O2 minus, already O3 is there. अच्छा, this is one more constant, R is equal to some constant K1, O3 square है. अच्छा, O2 minus है. With respect to ozone second order है, with respect to oxygen is minus one order है. देखो O3 square, अच्छा ये वाला second option है. O3 square O2 minus. आप देख लीजिए one second कैसा. This is slow step है. Slow step में rate define किया. But option में ये वाला नहीं है, ये intermediate है, ये वाला नहीं है. So hint is given, fast reaction is equilibrium है. Whenever equilibrium I can write equilibrium, nascent option I can write it. Substitute किया, that's it. Finally I got this. अच्छा, previously NEET examination this model question is asked once. Now 68 है. Equivalent weight of FeS2. अच्छा, equivalent weight of FeS2. देखो FeS2 है. अच्छा, X plus sulfide है. We are calculating sulfide here. Fe is sorry. अच्छा, 2 plus 2x is equal to 0. 2x is equal to 2. X is equal to minus 1. तो फेरस टू फेरिक है. फेरस टू फेरिक चेंज कितना है? 1 है. फेरस टू फेरिक चेंज कितना है? 1 है. तो देखो सल्फाइड है. अच्छा, 2 plus 2x is equal to 0, 2x is equal to 2, x is equal to minus 1. अच्छा, ये -1 to ये कितना +4 है. अच्छा, -1 to +4 कितना चेंज है? 5 चेंज है. 5 चेंज है. बट एन फैक्टर है, इस 1 सल्फर के लिए 5 चेंज है. 2 सल्फर के लिए एन फैक्टर कितना होता है? इसका एन फैक्टर कितना है? एन फैक्टर कितना होता है? 10 होता है. अच्छा, 10 + 1 कितना होता है? 11 है. टोटल चेंज इज m/11. अच्छा, सल्फर के लिए 10 है, आयरन के लिए 1 है, सो टोटल चेंज इज 11 है. 11 लिखता हूं फॉर 1 मोल ऑफ द रिएक्टेंट है. दिस n मोल फैक्टर सॉरी n फैक्टर 11 है. सो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू m/11 होना चाहिए. सो 68 एक बार देख लीजिए. Which of the following is free radical substitution है? अच्छा, साइड चेन में होता है ये वाला फ्री रेडिकल है. डेल्टा मींस हाई टेम्परेचर है, यूवी लाइट गानी, हाई टेम्परेचर गानी. साइड चेन में सब दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. अच्छा, दिस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है. ये वाला एडिशन होता है. देखो डबल बॉन्ड के बिकम सिंगल बॉन्ड, एडिशन है. ये कैसा एडिशन है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है. ये एडिशन रिएक्शन नॉट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. दिस EAS रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है. फिनोल बेस्ट एग्जांपल है. रिंग में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है. एंड मार्कोनिकोव रूल इज एन एग्जांपल फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. अच्छा, देखो फॉर आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन, आइडियल सॉल्यूशन के लिए
मीन्स आइडियल सॉल्यूशन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ओनली। आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये वाला करेक्ट है ना, देखो डायरेक्टली डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, डेल्टा जी लेस देन 0, V mixer 0, delta H mixer is equal to 0 होना चाहिए। This is for ideal solution के लिए। So mixing of the solution spontaneous है, delta G negative, अच्छा entropy should be greater than 0, and whenever mixing during mixing है, neither volume can change or energy can change only। अच्छा species formed on mixing of H2SO4 and HNO3। 71 एक बार देख लीजिए आप, 71 का नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन है, मैकेनिज्म है, एक बार देख लीजिए। अच्छा आपको मैकेनिज्म एक बार मैंने एक्सप्लेन करूंगा। 71 HNO2, अच्छा सल्फ्यूरिक एसिड है, ये वाला सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा ये प्रोटोनेशन है, प्रोटोनेशन करूंगा मतलब ये वाला होता है ना। अच्छा बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये NO2 प्लस आएंगे प्लस H2O HSO4 माइनस है, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल है, ये वाला न्यूक्लियोफाइल है। नाइट्रेशन ऑफ दी बेंजीन नाइट्रेशन, फिनोल नाइट्रेशन में नाइट्रेशन मिक्सर ऐसा होता है। बट क्वेश्चन इज आस्क्ड, आप देख लीजिए, आई थिंक दिस इज ना फर्स्ट स्टेप है ना, आप देख लीजिए। HSO4 माइनस है, देखो HSO4 माइनस है, ये वाला देखो H2NO3 प्लस H2NO3 प्लस। अच्छा they are not giving separately, entire molecule they have written once only, that's why you are confusing, otherwise mechanism very simple आपको। अच्छा this is nothing but which can accept a proton, this is a ब्रोनेस्टेड बेस होता है, ये वाला ब्रोनेस्टेड एसिड होता है। सम टाइप क्वेश्चंस आर व्हिच इज फॉलोइंग ब्रोनेस्टेड एसिड है, ब्रोनेस्टेड बेस आल्सो, वेरी सिंपल फंडा। नेक्स्ट, which of the following is incorrect, which of the following is incorrect statement है, incorrect statement है। अच्छा देखो, अच्छा अल्टेम इज 2000 टाइम्स स्वीटर है, हाई पोटेंशियल स्वीटनर, करेक्ट। अल्टेम इज 2000 टाइम्स स्वीटर है। BHT, BHE are antioxidants, correct only. Aspirin, paracetamol are, there are non-narcotic ना, नार्कोटिक नहीं, नॉन नार्कोटिक, which is incorrect है, ये थर्ड वाला is incorrect हो। देख लीजिए एक बार, paracetamol like aspirin are example for non-narcotic है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, equal volumes of two solution pH values are 8 to 10 है। अच्छा for your kind information, these formulas are there। बेसिक सॉल्यूशन के लिए two basic solutions are mixed with equal volumes are relative pH is equal to higher pH minus 0.3, am I right? 10 minus 0.3 which is equal to 9.7, but in case of acidic solutions are given है lower pH plus 0.3, in case of acidic is given है, for example pH is equal to 2, pH is equal to 5 is given, in case of acidic solutions are given, and volume V1 is equal to V, V2 is equal to V. Now relative solution pH is equal to lower pH plus 0.3, मतलब 2 plus 0.3 which is equal to 2.3। अच्छा हायर pH के लिए सॉरी बेसिक सॉल्यूशन के लिए हायर pH minus 0.3, एसिडिक सॉल्यूशन के लिए लोअर pH plus 0.3। अच्छा देखो एनाल्कीन ये on ozonolysis gives equimolar mixture of ethanol and pentanol। अच्छा फर्स्ट we can go for ethanol and pentathione।
अच्छा, you can write ethanol and penta-3-one. देखो, ethanol I write first. I will write ethanol first. Ethanol I write first. CH3 CW1OH. This is ethanol I will write first. Then pentane-3-one. Pentane-3-one. अच्छा, CH3 CH2 C double bond O CH2 CH3. अच्छा देखो, नंबरिंग आल्सो आप नंबरिंग भी दे दो, 1 2 3 4 5 पेंट, 3 pentanone is given, 3 pentanone is given. Now Wolfgang's products are, you can think about reverse है. Reverse क्या है? यहाँ डबल बॉन्ड एलिमिनेट करो, यहाँ डबल बॉन्ड एलिमिनेट करो, देन अल्कीन बनेगा CH डबल बॉन्ड C CH2 CH3. अच्छा, मैंने यहाँ करूंगा C2H5, कोई दिक्कत नहीं, C2H5, ये अल्कीन बनेगा आपका, ये अल्कीन बनेगा. नाउ दिस अल्कीन addition of HBr to this alkene A in the presence of organic peroxide gives major product BN. Addition means anti-Markovnikov rule apply करो. Addition of HBr apply करो, anti-Markovnikov rule in the presence of peroxide, anti-Markovnikov. So according to the anti-Markovnikov rule, negative part of the reagent added to the more number of hydrogen atoms only. According to Markovnikov rule, negative part is added to less number of hydrogen. Here more number of hydrogen. मतलब more number of hydrogens का मतलब, अच्छा, I can add hydrogen over here. Negative part of the reagent added to the more number of hydrogen है CH3 CHBr CH C2H5 C2H5. अच्छा, यही कंपाउंड होना चाहिए. देखो, ये कंपाउंड होना चाहिए B. This is A. Again, they are asking B. अच्छा, CH3 CHBr. अच्छा, एक बार देख लीजिएगा. अच्छा, ये वाला ना फर्स्ट ऑप्शन है ना, 74 देख लीजिए. अच्छा, ये देखो, ये C2H5 ना, ये भी C2H5 ना, देखो C2H5 ना, C2H5 ना, ये वाला. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए. Question number 75. Crystal field stabilization energy for complex है. This complex is given है. अच्छा, for your kind of information, formula for crystal field stabilization energy का formula -0.4 into x, 0.6 into y. अच्छा, x and y are number of electron in 2Tg orbitals, number of electron in EZ orbitals. This is formula. अच्छा, first of all, can you write electronic configuration है? अच्छा, this weak field ligand है. अच्छा, ये Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में, Fe+2 में 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. अच्छा, how you write 3d6 है? This is a weak field ligand है, weak field ligand है. So then first you have to write T2G में 3 है, EZ में 2 है. So we have to fill the electron like that. अच्छा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. मींस EZ में how many electrons are? T2G में 4 electrons.
T2C में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा माइनस 0.4 इंटू 4 है। EZ में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 0.6 इंटू 2। अच्छा माइनस 1.6 है। अच्छा ये 1.2 है, which is equal to minus 0.4. Minus 0.4 means 4 D. 4 D. Identify incorrect statement about PCl5. अच्छा देखो PCl5 ये एक्सियल बॉन्ड्स है, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है। अच्छा ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अच्छा ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अच्छा ये इनकरेक्ट है बिकॉज PCl5 is H3PO4 है, not H3PO3, which is incorrect है 76 है। अच्छा एसिडिक बफर है, देखो एसिडिक बफर का क्या बनना है, वीक एसिड salt of a strong base or else excess of weak acid and strong base। अच्छा ये मिली इक्विवेलेंस देखो यहाँ 50 500 into 0.1, यहाँ मिली इक्विवेलेंस का कैलकुलेट करो 50 into 5 सॉरी 500 into 0.5 50 into 5 ఎంత 125 సరే 50 into 150 this is 250। अच्छा देखो एक्सेस ऑफ वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस एक्टिंग लाइक ए बफर। देखिए यहां देखो ये 5 है, 100 into 1 base 10 है। अच्छा 50 ml of 0.1 molar is equal to 5 है, 100 ml of 0.1 10 है। It is also acting like a buffer, excess of weak acid। अच्छा देखो 100 into 0.2 10 into 2 20 है, ये 50 है, it is also acting like a buffer। अच्छा ये 500 है, ये भी 500 है। Now it is not acting like a buffer, sorry, all are acting like a buffer है, third option not acting like a buffer। 77 objective which is not acting like a buffer। का आंसर 3 होना चाहिए। ये जो एक्सेस ऑफ एसिड है, एक्सेस ऑफ एसिड है, बट बोथ आर इक्वल है, बोथ आर इक्वल होता है, साल्ट होता है, बफर नहीं होता है। बोथ आर इक्वल है, एसिड एंड बेस बोथ आर इक्वल है, साल्ट होता है, इट इज नॉट ए बफर। अच्छा डीकार्बोक्सिलेशन, आज फॉर काइंड इंफॉर्मेशन beta keto acids undergoes decarboxylation very easily, this is alpha beta। अच्छा beta keto acids are undergoes decarboxylation। अच्छा we made one video also regarding to beta keto acids, especially in previously AIMS का examination में, JEE examination में this question sir ask करे, beta keto acids undergoes decarboxylation very easily। अच्छा 79 का बताओ। अच्छा वेरी सिंपल है, ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, देखो ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, ये का 3 है, ये का 3 मींस दिस टू आर गलत है। अच्छा ClO4 माइनस का टेट्राहेड्रल एवरीबॉडी नोस है, ClO4 टेट्राहेड्रल मतलब D2 होना चाहिए। अच्छा ये क्या ऑप्शन में है? अच्छा वी नो दिस इज बेंड शेप ना, जस्ट लाइक ClF3 ये बेंड शेप होता ना, सी ऑप्शन। अच्छा ये क्या ऑप्शन में करता है? अच्छा वन डेफिनेटली विल गिव 1 or 2 क्लू,
in match the following questions only. We are enjoying while doing the match the following questions. The correct statement regarding to manganate and permanganate. अच्छा manganate क्या है, permanganate क्या है? अच्छा K2MnO4 ये मैंगनेट है, KMnO ये परमांगनेट। अच्छा देखो MnO4 2- है, ये मैंगनेट आयन है, ये परमांगनेट आयन है, ये मैंगनेट है परमांगनेट। अच्छा MnO- डबल बॉन्ड वो वाला टेट्राहेड्रल ओनली। अच्छा ये वाला ए डबल बॉन्ड वो, ए डबल बॉन्ड वो, ए डबल बॉन्ड वाला टेट्राहेड्रल ओनली, नो डाउट टेट्राहेड्रल ओनली। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, नो डाउट है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, नो डाउट है। बट पाई बॉन्ड्स है, d पाई p पाई, ऑक्सीजन में d ऑर्बिटल नहीं होता है, d पाई p पाई, बट हियर आल्सो d पाई p पाई। अच्छा d पाई p पाई, d पाई p पाई। नाउ देखो व्हाट क्वेश्चंस आर आस्क्ड। अच्छा which is incorrect है, both are tetrahedral geometry, both are sp3 only। अच्छा green, what is the green color, what is the purple color? This is correct only। potassium manganate is a green color है, potassium permanganate is purple color, correct only। अच्छा both आया में +7 is incorrect है, यहाँ +6 है, यहाँ +7 है, which is incorrect है। नेक्स्ट, अच्छा d पाई ना, d पाई p पाई ना, d पाई p पाई होना चाहिए ना। ऑक्सीजन में d पाई never be possible है ऑक्सीजन में, बिकॉज़ ऑक्सीजन में वेकेंट d ऑर्बिटल है, d पाई p पाई होना चाहिए। ओनली करेक्ट ऑप्शन इज 80 क्लोज। Which of the following species is stable है? अच्छा ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है। अच्छा ये भी अनस्टेबल है, बिकॉज लार्ज 6 chlorine atoms कैन नॉट अकोमोडेट विद सिलिकॉन ओनली। अच्छा बोरान का Na3 ये लेफ्ट 60, दिस इज नॉट स्टेबल। अच्छा ओनली पॉसिबिलिटी इज covalency of beryllium is 4 is possibility there, but boron covalency 6 is not possibility there। So 81 question देखो, only possible options are which is equal to fourth option only। Next question number 83 82 देखो। अच्छा they are asking equilibrium constant। अच्छा whenever equilibrium constant ask करना, QC is equal to KC होना चाहिए, E cell is equal to 0 होना चाहिए कंडीशन। नेनेस्ट इक्वेशन अप्लाई करो। नेनेस्ट इक्वेशन क्या है, E is equal to E naught minus 0.059 by, अच्छा both case number of electron involved is equal to 2 log QC। अच्छा QC is equal to KC होना चाहिए, E cell is equal to 0 होना चाहिए, am I right? अच्छा ये 0 होना चाहिए, ये KC होना चाहिए। Then E naught is equal to 0.059 by 2 log KC to the base 10। अच्छा E naught वैल्यू है Na plus 2 Na Kg plus, this is cathode है, this is anode है। अच्छा कैथोड माइनस एनोड है, कैलकुलेट करो, कैथोड माइनस एनोड है, कैथोड माइनस एनोड है 0.80 0.25। अच्छा 1.05, अच्छा 1.05 into 2 तो मल्टीप्लाई करो 2.10, ये वाला 2.10 like 2.10 divided by 0.05 which is equal to log Kc to the base 10। अच्छा 2.1 upon 0.05 कैलकुलेट करो, approximately 35.5।
मतलब this value is 35.5. Kc is equal to 10 for 35.5. First option. And direct question है. Simple calculation आप देख लीजिए calculation part है. 2.10 by 0.05 which is equal to 35.59. Right? अच्छा, previously asked a question also like this. Beryllium hydroxide is amphoteric. अच्छा, देखो 1 second. What are you? Which are the following correctly matched? Which is incorrectly matched? Beryllium amphoteric होना चाहिए. अच्छा, ये न्यूट्रल करेक्टली मैच है. SiO2 एसिडिक होना चाहिए, ये भी करेक्ट इनकरेक्ट है. ये बेसिक होना चाहिए, ये भी इनकरेक्ट है. वो जो करेक्टली मैच इज सेकंड ऑप्शन होगा, न्यूट्रल ऑक्साइड है. अच्छा, लो प्रेशर मींस मॉडरेट प्रेशर. देखो लो प्रेशर का मतलब मॉडरेट प्रेशर होगा. अच्छा, वेन डर वाल्स इक्वेशन आप देख लीजिए. वेन डर वाल्स इक्वेशन है P plus A by V square 1 mole के लिए V minus B is equal to RT. This is Van der Waals equation. अच्छा, moderate pressure के लिए, moderate pressure और low pressure के लिए B is negligible. B is negligible. Then P plus A by V square into V is equal to RT. अच्छा, PV plus A by V is equal to RT. अच्छा, PV is equal to RT minus A by V. RT से डिवाइड करो. PV by RT is equal to 1 minus A by RT. मतलब Z is equal to 1 minus A by RT भी होना चाहिए. Z is equal to 1 minus A by RT. ये वाला था 84. Low pressure, very low pressure means PV is equal to RT. Low means moderate pressure का मतलब ये वाला. देखो एक बार देखो. Moderate pressure में B is negligible है. Then we can solve it. Z is equal to 1 minus A by RT or VRT. Anyone same one? Next question number 85. In FCC, that is anions forms FCC. अच्छा देखो anions, whenever anions are FCC, A is equal to 4. FCC में Z is equal to 4 होता है. Anions A is equal to 4 होना चाहिए. अच्छा, when anions A is equal to 4, OVs कितना होता है? 4 होना चाहिए. TVs कितना होता है? 8 होना चाहिए. But B occupies 50% of tetrahedral voids. अच्छा, 50% of tetrahedral voids है. अच्छा, B occupies 50% means one of what? Tetrahedral voids. Eta. Nothing but again 4 है. So molecular formula AB होना चाहिए. A4 B4 nothing but AB होना चाहिए. 85. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है. आप देख लीजिए वंस. क्वेश्चन नंबर 86 है. 1 second. Sorry. Now, which question? I think question number 86. Yeah. अच्छा, question number 86. Which of the following process involves decrease in entropy? अच्छा, expansion में always entropy increases है. So decrease they ask करना. This is incorrect. अच्छा, boiling of egg always entropy increases है because boiling of egg denaturation of the proteins only. Coil become uncoiled, entropy increases only. Decomposition means अच्छा, PCl5 changes into PCl3 and Cl3. Gases products increases, entropy increases only. Freezing of water only ना, entropy decreases only. Expansion में entropy increase, freezing में entropy decreases only. अच्छा, water converted into ice है, entropy decreases only. Dissolvance decreases only. अच्छा, which of the following transition in a hydrogen spectrum produce spectral line UV? UV region means N1 is equal. अच्छा, very simple है. Whenever UV region is given है, N1 is equal to 1 होना चाहिए. 3 to 2 है. ये Balmer series है, Paschen series है. ये Lyman series. Lyman series nothing but UV region only. अच्छा, composition of syn gas है. Syn gas is nothing but water gas है. CO plus H2.
Syn gas is nothing but water gas है, synthetic gas है. Now which of the following is ore of iron ore? अच्छा, ore of iron is nothing but siderite ना, iron carbonate is nothing but siderite है. कैलामाइन इज जिंक का है, जिंक कार्बोनेट है. ये एल्यूमिनियम का है. ये मैलासाइट इज नथिंग बट कॉपर का है. सिडराइट इज नथिंग बट आयरन का है, आयरन कार्बोनेट इज. नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिस्ट्रिक्शन. अच्छा, फॉर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, अच्छा इन आवर नोट्स आल्सो वी डिस्कस्ड है फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन. अच्छा, ये वाला करेक्ट है. फॉर्मिक एसिड इज then benzoic acid. Aromatic acid is more acidic than aliphatic acid. Aromatic is greater than aliphatic acid, but formic acid is greater than, because there is no plus effect minus effect in formic acid. अच्छा, very simple है. NCERT में दिया formic acid is more acidic than benzoic acid. We discussed so many times in our classroom. 90. अच्छा, 91 देखो. Number of sigma and pi bonds in 3-methyl hexa 1,3-diene 5-ine. अच्छा देखो, ये स्ट्रक्चर आप ड्रा करना पड़ता है ना. अच्छा, हेक्सा देखो 1 2 3 4 5 6 हेक्सा. नंबरिंग इज गिवन. आई विल गिव द नंबरिंग है. अच्छा, 1 2 3 4 5 6. हाँ देखो ना, 3 मिथाइल है, थर्ड कार्बन में मिथाइल है, 3 मिथाइल है. अच्छा, 1,3 डाइईन है, 1,3 डाइईन है. अच्छा, 1 में डाइईन है, 3 में भी डाइईन है, 1,3 डाइईन है. अच्छा, 1 में 3 में भी डाइईन है, 5 आयन है. अच्छा, 5 आयन मींस ये वाला 5 आयन है. अच्छा, काउंट करो. एक वैलेंसी है, एक हाइड्रोजन यहाँ आता है, 4 वैलेंसी सफिशिएंट है. एक हाइड्रोजन यहाँ होता है, एक 3 हाइड्रोजन से यहाँ होता है. यहाँ है. ना काउंट करो नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड. अच्छा, पाई बॉन्ड्स काउंट करो, कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए. 1 2 3 4. मतलब ये दोनों गलत है, ये दोनों गलत है. ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2. सिग्मा बॉन्ड काउंट करो. अच्छा, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 4 है, 5 6 है, 7 है, 8 है, यहाँ 3 11 है, 12 13 14. अच्छा, 14 सिग्मा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 में कंपाउंड एक्स इज नथिंग बट कार्बोनिल रिएक्शन. कार्बोनिल रिएक्शन में क्या होना चाहिए? आइसोसाइनेट है, which gives only prime isocyanate. इस कार्बोनिल रिएक्शन है, कार्बोनिल रिएक्शन है, आइसोसाइनेट. अच्छा, दिस कोवेलेंट ब्लैक रिडक्शन है, आइसोसाइनेट रिडक्शन यूज सेकेंडरी अमाइन्स ओनली ना. सेकेंडरी अमाइन्स ओनली. देखो ये वाला सेकेंडरी अमाइन्स है, सेकेंडरी अमाइन्स होना चाहिए. Now oxidation state of bromine in tribromo octoxide. अच्छा देखो, Br3O8 है. I will let Br3O8 है. ये वाला ना Br, ये वाला ना Br. I think previously question is also asked है. अच्छा, यहाँ ब्रोमीन का, ये ब्रोमीन का देखो, ये +2 है, ये +2 है, ये +2 है. बिटवीन ब्रोमीन एंड ब्रोमीन देयर इज नो कंट्रीब्यूशन. एक +6 है, यहाँ +6 है, टिमनेम में +6 है, यहाँ +2, यहाँ +2, मतलब +4. +6 +4 इज पॉसिबल. टिमनेम में +4 है, बिटवीन +4. अच्छा, यहाँ और सपोज यहाँ और चाहिए आपको,
6 plus 4 plus 6 डिवाइड बाई 3 कितना हुआ 16/3 होता है। आरएल से आप देख लो 3x minus 16 is equal to 0, 3x is equal to 16, x is equal to 16/3 also। यहाँ और 16/3 होता है बट टर्मिनल में +6 है, इन बिटवीन +4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है, 94 है, वेरी सिंपल है आपके लिए। अच्छा यू हैव टू फॉलो मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए n+l रूल फॉलो करो। इफ n+l रूल इज सेम है देन which orbital having higher n value is a higher energy level only, n+l value। अच्छा क्या क्या दिया आप देख लीजिए, 4f दिया, 4p दिया, 4d दिया, अच्छा 5b दिया, राइट 5b दिया। कैलकुलेट करो 5 + 1 6 है, 4 + 3 7 है, 4 + 1 5 है, 4 + 2 6 है। अच्छा 4f ज्यादा होना चाहिए, मतलब ये दोनों इनकरेक्ट है। 4f के बाद 5p होना चाहिए। अच्छा फर्स्ट हाफ ओनली करेक्ट है। n+l value you have to follow, you have to follow n+l value। अच्छा 9 to 5 which of the following does not involve disproportionation reaction। अच्छा disproportion means same element undergoes both oxidation reduction only। अच्छा ये disproportion है, ये भी disproportion है, these are best example, this is not disproportion because +7 है, ये +6 है, ये +4 है, both are reduction, there is no oxidation है, only both are reduction है, one can undergoes oxidation, another undergoes reduction only, right? ये incorrect है। 96 का देखो, freezing point of solution containing 0.18 grams of glucose in 100 grams of water। अच्छा freezing point चाहिए, डेल्टा TF is equal to I into M into KF, फॉर्मूला आपको मालूम है। अच्छा ग्लूकोज के लिए इवेंट ऑफ फैक्टर 1 I is equal to 1 है बिकॉज़ नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा M क्या है, मोलालिटी, वेट बाई ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 1000 बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू KF। अच्छा वेट दिया 0.18 है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 180 है, 1000 बाई ये वाला गिवन 100 है, KF वैल्यू इज गिवन 1.86। अब देखो कैलकुलेट करो, ये 180 होता है, 180 बाई 180 सब देखो 10 टाइम्स है, 1.8 बाई 180 into 1.86। डेल्टा TF कैलकुलेट करो 0.0186, और 1.6 में क्या होता है, 1.86 in 10⁻⁻², डेल्टा TF। But the required information delta TF is nothing but T0 minus T is equal to 1.86 10⁻² होता है ना, T0 0 होना चाहिए ना, वाटर है बिकॉज वाटर इज गिवन ना, सॉल्वेंट इज वाटर है, वाटर के लिए T0 is equal to 0, मतलब T is equal to -1.86 into 10⁻² होना चाहिए। Now question number 97 है, the relative lowering of vapor pressure। अच्छा Raoult's law ना, that's Raoult's law, direct formula। What is Raoult's law only they are asking question। The relative lowering of vapor pressure of dilute solution containing a non-volatile solute is equal to the mole fraction of the solute, which is nothing but definition of Raoult's law। Next question number 98 है, अच्छा मोलालिटी asked, they asking मोलालिटी ना। अच्छा मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलालिटी का फॉर्मूला वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 बाय कैपिटल W। अच्छा 5.85 बाय 58.5 1000 बाय 100। अच्छा 10 टाइम्स है, which is equal to 1 मोलर, 58.5 58, which is equal to 1 मोलर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 है. अच्छा, यार KH वैल्यू decreases, solubility increases. KH value decreases, solubility increases. अच्छा, KH वैल्यू लीस्ट कौन है? फॉर्मल्डिहाइड इज ग्रेटर, मतलब ये दोनों इनकरेक्ट है. फॉर्मल्डिहाइड इज करेक्ट. अच्छा देखो, ये दोनों फॉर्मल्डिहाइड में. अच्छा, फॉर्मल्डिहाइड. इसके बाद लीस्ट KH CH4 है. अच्छा, फोर्थ ऑप्शन 99 का. अच्छा, rate of formation of SO3 in this reaction is. अच्छा, rate of SO3 and O2 का रिलेशन है. फॉर काइंड इंफॉर्मेशन, rate is equal to minus dO2 by dt is equal to plus 1/2 into dSO3 by dt, or dSO3 by dt. And they're asking the rate of disappearance of O2, no? Chalo. 1/2 is equal to dO2 by dt. This is the question. अच्छा, concentration nothing but N by V ना. But देखो, SO3 is given how many grams है? 100 grams are given. अच्छा देखो, 100 grams है, 100 by SO3 का 80 है ग्राम मॉलिक्यूलर वेट. N का वैल्यू SO3 का N by 100 by 80 है, कितना होता है? 5/4 है. 5/4 है. 5/4 का मतलब, अच्छा देखो 5/4 है, SO3 का 5/4 है. अच्छा चलो, मैं क्या करूंगा, 1/2 इंटू ये 5/4 है. हंड्रेड बाय 80 मीन्स 5/4 है. अच्छा, वॉल्यूम फॉर 1 लीटर आउट देखें बोथ केसेस में, कोई प्रॉब्लम नहीं. अच्छा, dt इज आल्सो सेम रेट है. अच्छा, 1/2 इंटू 5/4 विच इज इक्वल टू dO2 by dt. अच्छा, ये 5/8 इज इक्वल टू dO2 by dt. ये कॉन्सेंट्रेशन है. कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 5/8 है. देखो, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 5/8 है. नथिंग बट N इज इक्वल टू 5/8 है. बट we want a weight है. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है. अच्छा, वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 5/8 इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना 32 है. अच्छा, 8 1s 8 4s which is equal to 20 है. अच्छा, ये वाला 20 है. देखो क्वेश्चन है कैसा है. रेट ऑफ फॉर्मेशन, जस्ट यू कंपेयर dO2 minus dO2 by dt is equal to this one. मतलब dO2 by dt is equal to half into this 5/4. How will 5/4? Concentration is equal to number of moles by volume. Volume suppose 1 liter I consider. 100 by 80 5/4. 1/2 into 5/4 is equal to dO2 by dt. 5/8 is equal to dO2 by dt. मतलब ये वाला हो गया concentration. Concentration is equal to 5/8 है. Nothing but volume is 1 liter. N is equal to number of moles is equal to 5/8 है. Number of moles 5/8 है. Then weight calculate करना. Weight is equal to number of moles into gram molecular weight, which is equal to 20. अच्छा, little bit I think when compared to previous paper, little bit lengthy था paper. Lengthy मतलब numerical stuff थोड़ा complicated नहीं है. Lengthy calculation, that's it. So for practice purpose, this kind of question we may ask, but final examination है, you practice this kind of question, it seems to be very easy in final examination. Thank you.